Hey guys, welcome to our channel आज के जीवी। तो आज आपके लिए मैं नेक्स्ट क्यू कार्ड लेकर आया हूँ। नेम ऑफ द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब समथिंग दैट वाज ब्रोकन इन योर होम एंड देन रिपेयर्ड। कहते कोई चीज़ बताओ जो आपके पास घर पे टूट गई हो और आपने रिपेयर की हो। एंड योर क्यूज आर व्हाट इट इज़, कहते वो कौन सी चीज़ थी, हाउ वॉज इट ब्रोकन, वो कैसे टूट गई, हाउ यू गॉट इट रिपेयर, आपने उसको रिपेयर कैसे किया, एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, कहते आपको कैसे फीलिंग हुई, फेल्ट हुई। मैंने आपको पहले भी बताया जब भी आपको क्यू आ रहा था तो WH फैमिली को याद रख लिया करो और एंड में आपने फीलिंग बता देनी है कैसे आपको फेल्ट हुआ वहाँ पे। ठीक है, कोई भी चीज़ आपके घर पे ब्रोकन हो सकती है, लाइक AC, रेफ्रिजरेटर, वॉच, एनीथिंग, चाहे वो वुडन का फर्नीचर हो। ठीक है, आप किसी के बारे में बता सकते हो लेकिन आपने रिपेयर की हो ये भी आप बता सकते हो इसमें। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया, मैंने एक रिस्ट वॉच मेरी टूट गई थी, मैंने उसको रिपेयर किया था। ओके, स्टार्ट माई सैम्पल आंसर। Being an engineer, I love to play with technological gadgets, as technology provides plethora of facilities ranging from transportation to electricity. I use to many electronic items like different type of gadgets such as laptop, watches, computer, mobile phone, and so on. Luckily, using these items make my life easier than before. Is a convocation idea to buy a newer model instead of getting the obsolete broken one repaired. However, just a few year back या weeks back भी आप कह सकते हो या year backs भी आप कह सकते हो, my wrist watch broken down. Fortunately, it was still under warranty, thus we did not have to replace it. All of a sudden, it ceased to work. We tried to connect it with my phone, but it did not get connected. Then we thought to check battery of the watch. When I plugged my watch charge into the socket, it was not working. That's when we knew the watch was broken. Not sure, but it could have been because of the voltage fluctuation as it rained cats and dogs. रेन्स कैट एंड डॉग्स का मतलब है जब हैवी रेन होती है। ठीक है, मंथ बैक thus we dialed the company and scheduled a technician visit. Upon arriving, he evaluated the situation and declared that the main circuit was burnt, which caused the watch to break down. The good thing was that he came equipped with all the necessary parts. So, without any further investigation, he replaced it. The feeling was definitely unpleasant. आप unpleasant की जगह down का dumps भी यूज़ कर सकते हो, ये एक idiom है जिसका मतलब भी unpleasant ही होता है, जैसे sad moment भी कह सकते हो आप। Whenever something breaks down in the house, it creates an unwanted risks. Unwanted risks का मतलब क्या होता है, जैसे अब कोई कहते हैं हंगामा मच गया हमारे घर पे, उसका मतलब कि आप यूज़ कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड दैट डे। Most of the food got spoiled because of this breakdown. However, once it got repaired, we received an official apology email from the company, which was indeed a good gesture from their end. We appreciate the quick and the prompt service provided by the company. ओके, तो ये मैंने एक सैम्पल आंसर लिखा था। इसके अलावा अगर और कोई आइडिया तो वो भी एलाबरेट कर सकते थे। फॉर मोर अपडेट विद आइल्स ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।